श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्था कोटिरुद्र संहितायाम् अथ षोडशोऽध्याय। ऋषियुचु सूत सर्वं विज्ञासी वस्तु व्यास प्रसादत ज्योतिषं च कथां श्रुत्वा तृप्तिर्नैर्व्यजायते तस्मात् त्वं हि विशेषेण कृपां कृत्वा तुलां प्रभु ज्योतिर्लिङ्गं तृतीयं च कथ्य त्वं हि नोऽधुना। सूतवाच धन्योऽहं कृत्कृत्योऽहं श्रीमता भवतां यदि गतक्षसङ्गमविप्रा धन्या वै साधुसङ्गति अतो मत्वा स्वभाग्यं हि कथयिष्यामि पावनीं पापप्रश्नाशिनी दिव्यां कथां च शृणु तादरात्। अवन्ती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी तत्रासीद् ब्राह्मण श्रेष्ठ शुभकर्मपरायणा विदाध्यन् कर्ता च वेदकर्मरता सदा अग्नया ध्यानसमायुक्त शिवपूजारत सदा पार्थवी प्रतिहं मूर्ति पूजयामास वै द्विजा सर्वकर्मफलं प्राप्य द्विजो वेदप्रिया सदा सतां गति समालेभे सम्यग्ज्ञानपरायणा तत्पुत्रास्ता दृशाक्षांशस्त्वारो मुनिसत्मा शिवपूजारता नित्यं पितरोर्नवमा सदा देवप्रियस्तज्येष्ठ प्रियमेधास्तथा परं तृतीये सुकृतो नाम धर्मवाही च सुव्रत तेषां पुण्यप्रतापा च पृथिव्यां सुखमेधता शुक्लपक्षे यथा चन्द्रो वर्धते च निरन्तरं तथा तेषां गुणास्तत्र वर्धन्ते संसुखावहा ब्रह्मा तेजो मयि सा वै नगरी चाभवत्तदा एतस्मन्तरे तत्र यज्जातं वृत्तमुत्तमं श्रूयतां तद्विश्रेष्टा कथयामि यथा श्रुतं पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरा बलवान् दैत्यराजक्ष धर्मद्वेषी निरन्तरं ब्राह्मणो वरदाना च जगतुच्छिका देवा पराजितास्तेन स्थानानि सारितास्तथा पृथ्व्यां वेदधर्माक्ष स्मृतिधर्माक्ष सर्वशा सफोटितास्तेन दुष्टेन सिंहेनैव शशाकुल यावन्तो वेदधर्माक्ष तावन्तो दूरता कृता तीर्थे तीर्थे तथा क्षेत्रे धर्मोन्नितक्ष दूरता। अवन्ती नगरी रम्या तैत्रका दृश्यते पुनः इत्थं विचार्य तेनैव यत्कृतं शूर्यतां हि तत् बहुसैन्यसमायुक्तो दूषणा स महासुरा तत्र स्थान ब्राह्मणा सुरवान् उद्दिश्य समुपाययो तत्रागत्य स दैत्येन्द्र क्षत्रुतुरो दैत्यसत्मान् प्रोवाचाहुवचनं विप्रद्रोही महाखला दैत्यवाच किमेते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो मम वेदधर्मरता एते सर्वे दण्डतां मता मम सर्वे देवा मया लोके राजानक्षपराजिता वशेकी ब्राह्मणा शक्या न कर्तुं दैत्यसत्तमा यदि जीवितुमिच्छा स्यात् तदा धर्मशिवस्य च वेदानां परमं धर्म त्यक्त्वा सुभागिना अन्यथा जीवने तेषां संशयक्ष भविष्यति इति सत्यं मया प्रोक्तं तत्कुरु ध्वं विषिक्ता। सूतवाच इति निक्षिप्य ते दैत्याक्षत्वार्पावका इव चतुर्दिक्षु तदा जाता प्रलये च यथा पुरा ते ब्राह्मणास्तदा श्रुत्वा दैत्यानामुदयं तदा न दुःखं लेभिरे तत्र शिवध्यानपरायणा धैर्यं स्माक्षतास्ते च रेखामात्रं तदा द्विजा न चेलु परमध्याना द्वारकाके शिवाग्रता एतस्मिन्नन्तरे तैस्तु व्याप्तिसी नगरी शुभा लोकाक्षपीडितास्तैस्तु ब्राह्मणा समुपाययु लोका ऊर्चु स्वामिनं किं च कर्तव्यं दुष्टाक्ष समुपागता हिंसिता बहवो लोका आघाताक्ष समीपता। सूतवाच तेषामिति वचा श्रुत्वा वेदप्रिये सुताक्षते समुचुरु ब्रह्मणा
स्तान्वे विक्षस्ता शङ्करे सदा ब्राह्मणमूर्च्छो श्रूयतां विद्यते नैव बलं दुष्टभयावहं न शस्त्राणि तथा सन्ति यच्च ते विमुखा पुनः समान्यस्यापमानो नो हाक्षस्य भवेदिह पुंश्च किं समर्थस्य शिवस्येह भविष्यति शिवो रक्षां करोत्वद्यासुराणां भयता प्रभु नान्यथा शरणं लोके भक्तवत्सलशिष्यवात् सुतवाच इति धैर्यं समास्थाय समर्च्छव चापार्थिवस्य च कृत्वा ते च द्विजासमयस्थाभ्यान्प्रियापरायणा दृष्ट्वा दैत्येन तावच्च ते विप्रा सबलेन हि दूषणेन वचा प्रोक्तं हन्यतां वध्यतामिति तच्छ्रुतं तैस्तदा नैव दैत्यप्रोक्तं वचो द्विजे वेदप्रियसुते शम्भोर्ध्यानमार्गपरायणे अथ यावत् स दुष्टात्मा हन्तुमेच्छद्विजांक्षतान् तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत् शब्दक गर्ता तत्समुत्पन्न शिवो विकटरूपधृक् महाकाल इति ख्यातो दुष्टहन्ता सतां गति महाकाल समुत्पन्नो दुष्टानात्वादृशामहं खल त्वं ब्राह्मणा हि समीपाद दूरतो व्रज इत्युक्त्वा हृत्कृतनेव भस्मासात् कृतवांस्तदा दूषणं च महाकाल शङ्करा सबलं द्रुतं कियत्सैन्यं हतं तेन किञ्चित्सैन्यं पलायितं दूषणहस्तेन शिवेनेहरात्मना सूर्यं दृष्ट्वा यथा याति सन्दक्षयं सर्वशस्तमः तथैव च शिवं दृष्ट्वा तत्सैन्यं विननाशः देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिं पपातः दिवा समाययुः सर्वे हरिब्रह्मादयस्तथा भक्तया प्रणमयतं देवं शङ्करं लोकशङ्करं तुष्टुवोर्विरुधे स्तोत्रे कृताञ्जलिपुटा द्विजा ब्राह्मणाक्षसमाश्वास्य सुप्रसन्न शिवा स्वयं वरं ब्रूतेति चोवाच महाकालो महेश्वरा तच्छ्रुत्वा ते द्विजा सर्वे कृताञ्जलिपुटास्तथा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या प्रोचु सनत्तमस्तका द्विजाऊर्चु महाकाल महादेव दुष्टदण्डकर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छ न शम्भो संसाराम्बुधिता शिवा अत्रैव लोककर्क्षार्थ स्थातव्यं हि तव्या शिवा स्वदर्शकानरान् शम्भो तार्यं त्वं सदा प्रभो सूतवाच इत्युक्तस्ते शिवस्तत्र तस्थो गर्ते सुशोभने भक्तानां चैव रक्षार्थ दत्त्वा तेभ्यश्च सद्वितं द्विजास्ते मुक्तिमापनाशच्च चतुर्दिक्षु शिवास्तदं पदं क्रोशमात्रं तदा जातं लिङ्गरूपिणम् एव च महाकालेश्वरो नाम शिवख्यातशच्छभूतले त्वं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किञ्चिदुःखमपि द्विजा ययं कामम् पेक्ष्यैव तलिङ्गं भजते तु या तं कामं वाप्नोति लभेन मोक्षं परत्र च एतत् सर्वं समाख्यातं महाकालस्य सुव्रता समुद्वश्च महात्म्यं किमन्य श्रोतुमिच्छत इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायां महाकालज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्याय ऋषिऊचु महाकाल समास्त्य ज्योतिर्लिङ्गस्य रक्षिणा भक्तानां महिमान च पुनर्ब्रूहि महामते सूतुवाच शृणुतार दतो विप्रा भक्तरक्षाविधायिना महाकालस्य लिङ्गस्य महात्म्यं भक्तिवर्धनम् उज्जयिन्यां बुद्राजा चन्द्रस्नेहा वो महान् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ शिवभक्तो जितेन्द्रिय तस्या भवत्सकाराज्ञो मणिभद्रो गणो द्विजा गिरीशगणमुख्यश्च सर्वलोकनमस्कृत एकदा स गणेन्द्रो हि प्रसन्नास्यो महामनिं मणिभद्रो ददो तस्मै चिन्तामणिमुदारधि स वै मणिकौस्तुभवद्योच्च
मानोकर्षनिभध्यातो दृष्टश्रुतो वापि मङ्गलं यच्छति ध्रुवं तस्य कान्तिर्तलस्पृष्टं कांस्यं ताम्रमयं रिपुपाशनादिक्मन्युद्वा धृतुं भवति हाटकं स तु चिन्तामणिकण्ठे बिभ्रद्राजा शिवाक्षय चन्द्रसेना सेनोरराजाति देवमध्य च भानुमान् श्रुत्वा चिन्तामणिग्रीवं चन्द्रसेनं नृपोत्तमं निखिलाश क्षितिराजानः श्रीकृष्णाशुक्तहृदो भवन् नृपामत्सरणी सर्वे तं मणिचन्द्रसेनता ननोपायैर्याचन्त देवलब्धमभूदय सर्वेषां भूभृतं याचा चन्द्रसेनेन तेन वै व्यर्थीकृता महाकाल दृढभक्तेन भूसुरा ते कदर्थी कृता सर्वे चन्द्रसेनेन भूभृता राजान सर्वदेशानां सरम्भं चक्रिरे तदा अथ ते सर्वराजान षट्चतुरङ्गबलान्विता चन्द्रसेन रेणुजेतु सम्बभूवु कलोध्यता ते तु सर्वे समेता वै कृत्सङ्गेतसंविदा उज्जयिन्शा चतुर्दारुं रुरुधर्भुवसैनिका सरुन्ध्यमाना स्वपुरीं दृष्ट्वा निखिलराजभीतमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययो निर्विकल्पो निराहार स नृपो दृढनिश्चय समानर्च महाकाल दिवानक्तमन्यन् यदि ततः स भगवान् शम्भुर्महाकाल प्रसन्नधि तं रक्षितुमुपायं स्वचक्रे त्वं शृणुतादरात् तदैव स्मै गोपी काचित्तत्र पुरोतमे चरन्ति स शिशुविप्रा महाकालान्तिकं ययो पञ्चावद्वयसं बालं वहन्ति भृतृकाराज्ञा कृता महाकालपूजा सा पश्यदादरात् सा दृष्ट्वा सहोमाश्चर्या शिवपूजां च ततः कृतां प्रणिपत्य स्वशिबिरं पुनरेवाभ्यपद्यत एतत्सर्वं मेषेण स दृष्ट्वा वल्लीसुता कुतूहलेन तां कर्तुं शिवपूजामनोदधे आनीय हृत्पाषाणं शून्ये तु शिबिरान्तरे अविदूरे स्वशिबिरा शिवलिङ्गं स भक्तिता गन्धालङ्कारवासोभिर्धूपदीपाक्षतादिभिः विद्याय कृतिमर्दैव्य नैवेद्यं चाप्य कल्पयत् भूयो भूय संभयर्च पत्रे पुष्पैर्मनोरमे नृत्यं च त्रिविधं कृत्वा प्रणाम पुनः पुनः एतस्मिन् समये पुत्रं शिवासक्तसुचेतसं प्रणयाद्रौपिका खातं भोजनाय समाहृता यदाहुतोऽपि बहुशः शिवपूजा मानसा बालश्च भोजनं नैच्छत् तदा तत्र ययो प्रसूतं विलोक्य शिवस्याग्रे निष्णम्मिलिते क्षणं चकर्ष पाणिसंगृह्य कोपेन समताडयत् आकृष्टास्ताडितश्चापि नागच्छत् स्वसुतो यदा तां पूजा नाशयामास क्षिप्तालिङ्गं चतुरता हाहेति दूयमानं तं निर्भरतस्य सुच्चं च सा पुनर्विवेश स्वगृहं गोपीक्रोधसमन्विता मात्रा विनाशितां पूजा दृष्ट्वा देवशूलिना देवदेवेति चुक्रोश निपात स बालका प्रनष्टसंज्ञ सहसा स बभूव शुचाकुला लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन चक्षुषी उन्मीलयत् तदैव जातं शिबिरं महाकालस्य सुन्दरं ददर्श स शिशुस्तत्र शिवानुग्रहतोचिरात् हिरण्मयबृहद्वारं कपाटवर्तोरणं महानील विमलव्रजवेदिविराजितं सन्तप्तहेमकलशैर्विचित्रैः बहुभिर्तमप्रोदासितमनिस्तभैर्बद्धस्फटिकभूतले
तन्मध्ये रत्नलिङ्गं हि शङ्करस्य कृपानिधे स्वकृतार्चनसंयुक्तं पश्यद्रोपिकासुता स दृष्ट्वा सहस्तोत्थाय शिशुर्विस्मत्मानसा सनिमग्नम् इवासीदय परमानन्दसागरे तथा सत्तुत्वा स गिरिशं भूयो भूय प्रणम्य च सूर्यचास्तङ्गते बालो निर्जगाम शिवालयात् तथा पश्यत् स्वशिबिरं पुरन्दरपुरोपमा सद्यो हिरण्मयी भूतं विचित्रं परमोज्ज्वलं सौन्तविवर्षभवनं सर्वशोभासमन्वितं मणिहेम गणाकीर्णं मोदमानो निशामुखे तत्रापश्यत् स्वजननी स्वपत्नी दिव्यलक्षणां रत्नालङ्कारदीप्ताङ्गी साक्षात् सुरवधूमिव अथोस धन्यो विप्रा शिवानुग्रहभाजनं जवेनोऽथ यापयामास मातरं सुविह्वला सोत्थितादुत्मालाक्षा पूर्वसर्वमिवाभवत् महानन्दसुमग्ना हि सस्वजे स्वसुतं च तम् श्रुत्वा पुत्रमुखात् सर्वं प्रसादं गिरिजापते प्रभुं विज्ञापयामास यो भजयन्निशं शिवं स राजा सागत्य समाप्तनियमो निशि ददर्श गोपिकासुनो प्रभावं शिवतोषणां दृष्ट्वा महीपति सर्वं तत्समात्य पुरोहिता आसनीमग्नो विधृति परमानन्दसागरे प्रेम्णा बाष्पजलं मुच्चन्द्रसेनो नृपो हि स शिवनामोच्चरणभृत्या परिरेभे तं भर्गमा महामहोत्सवस्तत्र भूवादुतो द्विजा महेशकीर्तनं चक्रुः सर्वे च सुखविह्वला एवमत्यदुताचारच्छिव महात्मये दर्शनात् होरानां सम्भ्रमा चैव सारात्रिक्षणतामगात् अथ प्रभाते युद्धाय पुरं संरुध्य संस्थिता राजानश्चारवक्त्रेभ्यः शुक्षुवुश्चरितं च तत् ते समेताश्च राजानं सर्वे ये समागता परस्परमिति प्रोचुस्तच्छ्रुत्वा चकिता अति राजानुचूचु अयं राजा चन्द्रसेन शिवभक्तोऽति दुर्जय उज्जयिन्या महाकालपुर्या पत्नीराकुला ईदृशाशीर्षवो यस्य पुर्या सन्ति शिवव्रता स राजा चन्द्रसेनस्तु महाशङ्करसेवकानुनमस्य विरोधेन शिवाक्रोधं करिष्यति तत्क्रोधाद्धि वयं सर्वे भविष्यामो विनष्टका तस्मादनेन राज्ञा वै मिलापकार्य एव हि एवं सति महेशान करिष्यति कृपां परां श्रुत्वाच इति निश्चित्य ते भूपास्त्यक्तवैरा सदाशया सर्वे भूव सुप्रीत्या न्यस्तशस्त्रास्त्रपाणया विविशुस्ते पुरीं रम्या महाकालस्य बुभृत महाकालं समानोचक्षन्द्रसेनामुनुमोदिता ततस्ते गोपवनितागेहं जग्मुर्महीभृता प्रशंसन्तश्च तदाज्ञं सर्वे दिव्यमहोदयं ते तत्र चन्द्रसेनेन प्रत्युत्थम्याभिपूजिता महार्विष्टरगता प्रत्यनन्दन् सुविस्मिता गोपसूना प्रसादात् तत्प्रादुर्भूतं शिवालयं सन्वीक्ष्य शिवलिङ्गं च शिवे चक्रुपरामतिम् ततस्ते गोपशिष्वे प्रीतानिखिलबुभुजा ददुर्बहूनि वस्तूनि तस्मै शिवकृपार्थना ये सर्वेषु देशेषु गोपास्तिष्ठन्ति भूरिशा तेषां तमेव राजानं चक्रिरे सर्वपार्थिवा अथासि मन्त्रे सर्वस्तिदृशैरभिः पूजिता प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान् वानरेश्वरा ते तस्याभिग्मादेव राजानो जातसम्भ्रमा प्रत्युत्थाय नमश्चक्रुर्भक्तिनम्रात्ममूर्तया तेषां मध्ये समासीना पूजिता पल्लवेश्वर गोपात्मजं तमालिङ्गा राज्ञो विक्षेद्यं
ब्रवीत् हनुमानुवाच सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिना श्रुते शिवं नान्यत्मा गतिरस्ति शरीरिणाम् इवं गोपसुतो दृष्ट्वा शिवपूजं विलोक्य च अमन्त्रेणापि सम्पूज्य शिवं वाप्तवान् एष भक्तवर्षम्भोर्वो गोपानाकीर्तिवर्धन इह भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्स्यति अस्य वंशष्टमो भावी नन्दो नाम महायशा प्राप्यस्ते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणं स्वयम् अद्य प्रभृति लोके सिन्मनेश गोपकुमारका नाम्ना श्रीकर चैलोकयान्ति गमिष्यति सुतवाच एमुक्त्वा अञ्जनीसूनु शिवरूपो हरीश्वरा सर्वान् राज्ञश्च चन्द्रसेनं कृपादृष्टा ददर्शः तस्मै श्रीकराय गोपुत्राय धीमते उपादिदेश सुप्रीत्या शिवाचारं शिवप्रियं हनुमानत् सुप्रीता सर्वेषां पश्यतां द्विजा चन्द्रसेनं शिखरं च तत्रैवान्तर्धीयता त्वं सर्वे च महापीला संहृष्टा प्रतिपूजिता चन्द्रसेन समामन्त्र्य प्रतिजग्मुर्यथा गतं श्रीकरोऽपि महातेजा उपदिष्टो हनुमता ब्राह्मणे स धर्मज्ञक्षक्रे शम्भो समर्णन्म चन्द्रसेनो महाराज श्रीकरो गोपालका उभावपि परप्रीत्यया महाकालं च भेजतु कालेन श्रीकरसोऽपि चन्द्रसेनक्षभूपति समाराध्य महाकालं भेजतु परमपदम् एवं विधो महाकाल शिवलिंगं सतां गति सर्वथा दुष्टहन्ता च शङ्करो भक्तवत्सला इदं पवित्रं परमहरस्रहस्यं सर्वसौख्यदम् आख्यानं कथितं सर्वज्ञ शिवभक्तिविवर्धनम् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायां महाकाल ज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम 17 अध्यायः।